Hello students, welcome to Science Surfers. Today we are going to discuss a very easy trick to find the position and nature of the image formed in the case of concave mirror. We have already done this trick for the convex lens. So in this video we are going to understand the magic of number 8 for concave mirror. We know that concave mirror has a midpoint that is known as pole, and there is a point between P and C, that is center of curvature. We have a point that is F. Okay. So in this case also, what we are going to do, we are going to number them as we have done in the case of convex lens. We'll number P as 0. Okay. So between P and F, we will have a number 1. Then F we will number as 2. Then between C and F, we'll have a number that is 3. Okay. Then we have C at number 4 and 5 beyond C. Okay. And we'll write 6 for infinity. Okay. And in this case, we'll write 7 here. Okay. अब इसमें भी हमें यही चीज मालूम है कि कॉन्केव मिरर में जितनी भी इमेजेस हैं, they all are formed towards left side of the mirror. They are all रियल एंड इन्वर्टेड. इस तरफ जितनी भी एजेस बनती हैं वो रियल और इन्वर्टेड बनती हैं. एंड ओनली वन इमेज इज फॉर्म टुवर्ड्स द राइट साइड एंड दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. हमारे पास 6 to 2 मीन्स इन्फिनिटी से फोकस तक के सारे पॉइंट्स की रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी. ओनली वन पॉइंट दैट इज बिटवीन एफ एंड ओ विल हैव वर्चुअल एंड इरेक्ट. ओके. सो यहां भी हमने वही मैजिक ऑफ नंबर 8 याद रखना है. ओके. इट ऑल्सो वर्क्स वेरी वेल इन दिस केस. नाउ सपोज वी हैव द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी इन केस ऑफ concave mirror. Then the image will be formed at point where it adds up to make 8, that is 6 and 2 8. So that means if the object is at infinity, the image will be formed at focus, and if this side the image will be real inverted, and here at point O focus it will be point size. Okay. Now suppose we are having the object at 5. 5 means beyond C. So तो 5 में हम 3 ऐड करेंगे तो 8 बनेगा ना. So image will be formed between C and F, and here it will be real, inverted and diminished. We have point C at position 4. तो 4 में 4 ही ऐड होंगे तो 8 बनेगा. दैट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट C पे है तो उसकी इमेज भी C पर ही बनेगी, सेम साइज की बनेगी, बट इट विल बी रियल एंड inverted. Similarly, we have the position 3. So 3 में हम 5 ऐड करेंगे. So if the object is between F and C, then the image will be formed beyond C, and it will be real, inverted and magnified. Okay. Now we have the position at 2. 2 means focus पर है, तो infinity की focus पे है, तो focus की कहाँ बनेगी infinity पे. So we will form a real, inverted and highly magnified image at F, because 6 and 2 add up to give 8. Okay. Now we come to the point between F and P, that is 1. So 1 में हम 7 ऐड करेंगे तो 8 होगा. So that means अगर ऑब्जेक्ट P और F के बीच में है तो उसकी इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनेगी और मिरर के बैक साइड पे बनेगी. नाउ सी हाउ इजी इट इज टू रिमेंबर द नेचर, साइज एंड पोजीशन ऑफ द इमेज. दिस ट्रिक इज रियली गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जाम.